ठीक है, चलो गुड। अब नाउ दैट वी आर डन विद इट, आई होप यू अंडरस्टूड कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट, राइट, क्या क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट स्टेप वाज कि वी फाइंड आउट a and d. Second step was we draw graph as per a and d. And third step is कि we look at the inequality and accordingly find the answer. We refer to the graph. ठीक है, अब we are talking about a special format of polynomials. Quadratic का special case से डिराइव हो रहा है वो। मतलब any quadratic equation, जो हमारा पहला quadratic equation था, क्या था? x square minus 7x. What was it? It was x square minus ऐसा कुछ था, राइट? इसको हमने स्प्लिट किया था, मैंने तुम्हें बोला था ये x minus 5 x minus 2 होता है, राइट? ये बोला था मैंने तुमको। Where is that inequality? Let me bring it for you. सबसे पहली जो थी हमारी, the first one we did, x minus 5 x minus 2 greater than 0 हमने किया था, राइट? तो greater than 0 पे हमारा आंसर आया था x belongs from minus infinity to union 5 to infinity. ये हमारा आंसर आया था, राइट? तो अभी if instead of giving you questions like that, quadratic equation तुम्हें पूरा ऐसा देने की जगह, instead of giving you the quadratic inequality like this, they give you like this. ठीक है, ये फॉर्मेट में तुम्हें मिली है। तो ये फॉर्मेट में मिली है तो क्या इसका मतलब तुमने क्या किया? तुमने ड्रॉ किया ग्राफ। क्या ड्रॉ किया तुमने? ग्राफ। ग्राफ में तुमने क्या पकड़ा? ग्राफ में यू वर लाइक ओके ब्रो, सो द थिंग इज कि देयर इज 2, देयर इज 5, x माइनस 5 है, x माइनस 2 है, तो माइनस 5 माइनस 2 की जगह पे 2 और 5 प्लेस हुआ, राइट? ये 2 और 5 प्लेस होगा एंड द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। ऐसे ही ग्राफ गया था, राइट? ऐसे ही गया था ग्राफ, है ना? इस साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही गया था ग्राफ। मैं यहाँ पे थोड़ा लेट मी हैव सम स्पेस टू एक्सप्लेन यू अदर थिंग्स। तो लाइक ओके, ये -5 का 5 प्लॉट हुआ, -2 का 2 प्लॉट हुआ एंड द ग्राफ वेंट लाइक दिस, है ना? ग्राफ वेंट लाइक दिस। तो इस हिसाब से दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो इस हिसाब से whenever you have any questions of this format, of what format? Note down, of format x minus a into x minus b into x minus c into x minus d, whatever, less than greater than 0, whatever, less than greater than whatever 0. तो जब ऐसे फॉर्मेट में होता है, what do we do? On the axis we plot our a b c d like we plotted 2 and 5, and then what happens is your graph starts from this side. It is positive and then it becomes negative and then positive and then negative and then positive. This kind of graph will be formed. इस साइड से हमेशा स्टार्ट होगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हर एक नोड पे डाउन अप डाउन अप ऐसे जाएगा। और अगर तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा है तो लाइक ओके ग्रेटर देन इज हियर, सो माय आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू a b to c d to infinity. अगर उन्होंने मुझे लेस देन 0 पूछा तो लेस देन 0 में माय आंसर विल बी a to b यूनियन c to d, है ना? इस तरीके के आंसर है। और इक्वल टू 0 कहाँ पे? a b c और d पे। तो दिस इज हाउ आई विल गिव द आंसर। तो इन स्पेशल केस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऐसे ही होता है कि हम जैसे जब भी हमें क्वेश्चन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c वाले फॉर्मेट में आया तो एबीसीडी प्लॉट करके राइट साइड से स्टार्ट करके हम वेव्स बनाएंगे। डू यू रिमेंबर मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें वेव्स पढ़ाऊंगी व्हेन वी वर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, एंड आई टोल्ड यू कि इसको इनइक्वालिटीज में और समझाऊंगी, इनइक्वालिटीज में और समझाऊंगी। तो यही बात थी वो कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंस्पिरेशन है इसका कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाता है राइट साइड से। तो वैसे ही यहाँ से राइट साइड से हम बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही नोट्स है वैसे, एंड उस हिसाब से हम आंसर देंगे। फिर तो इसी को अप्लाई करते हुए लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या प्लॉट होगा? 1 2 and 3 प्लॉट होगा, राइट? 1 2 and 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से वी विल टर्न टुडुम, है ना? हर एक नोड पे यहाँ पे पॉजिटिव है आंसर्स, राइट? इस पार्ट में नेगेटिव है। तुम्हें क्या पूछा है? Where is your x greater than equal to 0? Where is it greater than equal to 0? Here it is greater than 0. Here it is greater than 0. Right? Equal to 0 कहाँ पे? 1, 2 और 3 पे। तो your answer is x belongs from 1 to 2 both included union 3 to infinity. So this is your answer. Think of it. इसको थोड़ा सा वो बनाती हूँ, है ना? x belongs from 1 to 2 union 3 to infinity. This is your answer. समझ गए हम कैसे निकाला? इजी पीजी। ऐसे ही इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। Whenever you have of this format x minus a, x minus b, x minus c, तो ये अप्लाई होगा। चलो करो, उसके बेसिस पे ये करो सॉल्व। Tell me what the answers are. Very good. So we will plot 1. इसका -1 प्लॉट होगा। क्यों? Because it is x plus 1, which is nothing but x minus -1, right?
हमें x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी वाला फॉर्मेट चाहिए, तो इसलिए x माइनस माइनस वन है, इसलिए प्लस वन हुआ, तो यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, माइनस वन होगा, यहाँ पे टू प्लॉट होगा, यहाँ पे माइनस टू प्लॉट होगा. सो लेट अस ड्रॉ इट, लेट अस ड्रॉ. क्या क्या प्लॉट हो रहा है, वन टू minus 1 minus 2 on the number line, right? Then we start from this side and they're like 1 2 4. Yeah, okay, right? Now you are asking me where will it be less than 0? Where is it less than 0? This part, right? So what is my x? My x belongs from minus 2 to minus 1 union 1 to 2, and none of these are included. Why? Because equal to 0 nahi bola, none of these are included. किसका सही आया ये आंसर? Why don't we mark 0 on the graph? Is because 0 is not given here, no? Did we mark 0 when we marked quadratic equation solve karte hue? Did we mark 0 there? No, right? What comes basically 0 on the number line is basically what comes on the number line where the value of this equation is going to be 0. So at 0, this value is not going to be 0. That's why we don't put. We only plot these numbers. Fair? Okay? Cool. Who all got these answers right? Tell me किसका सही आया आंसर ये? Okay. वेरी गुड. चलो ये करो, ये सॉल्व करना. So for this what happens is this x minus 0, x plus 1 and x minus 1 greater than 0. यहाँ पे देखो हमको फॉर्मेट क्या चाहिए, x माइनस x माइनस बी x माइनस सी का ही फॉर्मेट चाहिए स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे बस x है, तो सिर्फ x से तो अपना काम नहीं चलेगा, तो इसको x माइनस 0 बना दिया हमने. तो क्या क्या प्लॉट होगा, 0 प्लॉट होगा, माइनस 1 प्लॉट होगा और 1 प्लॉट होगा, राइट? लेट अस प्लॉट दिस नंबर्स 1 0 एंड माइनस 1. यहाँ से स्टार्ट होगा ट्विन ट्विन. यहाँ पे भी प्लॉटेड 0, राइट? व्हाई डिड वी प्लॉट 0 हियर? हे भगवान, वो क्या था, वो मीन था ना, हे जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या था, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, क्या समथिंग लाइक दैट ओनली, नो? हे प्रभु, नहीं, दैट इज द फ्रेज ना, द मीम इज डिफरेंट ना, समथिंग दे से, राइट? वो मुझे याद नहीं आ रहा. तो हरिराम कृष्ण, हाँ, ये समझ टोल्ड मुझे चैट है, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद. ये क्या हुआ? सॉरी, मैं रैंडमली किसी चीज पे ट्रिप करने लगती हूँ. ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट, this is greater than 0. I love your typing speed, by the way. This is greater than 0, right? तो ये greater than 0 कहाँ है, इधर है और इधर है. तो what is my x? My x is from minus 1 to 0 union 1 to infinity. Fair? Cool? ये यहाँ पे हमने 0 लिखा, क्यों? क्योंकि x था, और हमें remember we just want it in the format x minus a, x minus b, x minus c, so that we can plot ABC, we can draw these waves and we can plot our answer. ठीक है, चलो यहाँ पे क्या, अरे सेम थिंग रिपीट हो गई क्या? Yes. Is the same thing repeated? We will move ahead. Let's do this one. अब इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट है कि तुम्हें पावर्स मिले. अब तक जो था ये तो रेज़ टू पावर 1 थे ना सब कुछ, इसमें कोई पावर नहीं था, अभी पावर ऐड हो गया. पावर ऐड हो गया क्या मतलब क्या है? दिस इज x minus 1 into x minus 1, x plus 1 into x plus 1, राइट? 2 बार है ना, तो इसका 1, इसका 1, इसका माइनस 1, इसका माइनस 1 प्लॉट होगा. फिर यही प्लॉट होगा. तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे और ये 2 बार आ रहा है माइनस, राइट? तो अभी एज यूजुअल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, यहाँ डाला. अब यहाँ से मुझे नीचे जाना था बट मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्यों? मुझे नीचे जाना था बट मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा 1 2 बार आया है, राइट? तो वो 1 पे ही नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया, राइट? बिकॉज आई हैव प्लॉटेड 1 2 टाइम्स, my 1 goes from here, it should have gone down, but down say it came up again at this 1 only, so it will be 1 again. Then from here I was supposed to go down, but again here at 1 itself down से वो up फिर से हो गया. Understood? So at every even power, your graph does not change its direction at all, क्योंकि वो वहीं पे 2 times आया है ना. So that is why it will be like this. Now you have to find where is it less than 0. Is it less than 0 anywhere? No. The answer is no solution, because there is no negative here only. Simple सवाल भी देखो ना तुम, किसी का स्क्वायर इनटू किसी का स्क्वायर, स्क्वायर इज पॉजिटिव इनटू स्क्वायर इज पॉजिटिव, हाउ कैन यू हैव 0 लेस देन 0? पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा. सो व्हेनेवर देयर आर इवन पावर्स, दिस इज व्हाट हैपेंस. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी क्या प्लॉट होगा? यहाँ पे प्लॉट होगा तुम्हारा 1 3 टाइम्स, यहाँ पे प्लॉट होगा -1 2 टाइम्स. सो देन लेट मी ड्रॉ इट.
ये -1 है और ये 1 है। अभी इसमें क्या हुआ, ग्राफ आया मेरा इधर। अब ये 1 पे वो नीचे, एक बार में नीचे जाएगा, दूसरे बार में ऊपर आएगा, तीसरे बार में फिर से नीचे जाएगा, 3 बार हो गया, फिर चला गया नीचे। एंड दैट -1 ये ऊपर जाएगा और सेकंड टाइम पे नीचे आएगा, तो 2 हो गए ऐसे। बॉटम लाइन बीइंग कि एट इवन पावर्स, whenever you have even powers, there is no change in direction. And when there are odd powers, जैसे पहले powers क्या थे, x minus a, x minus b, x minus c पे power was 1, सबका, that was odd, there's a change, there's a direction change. There's a direction change. अच्छे से है ना। अभी इसमें क्या प्लॉट करना है हमें प्लॉट करना है कि भाई तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे हो, तो तुम इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो और ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे हो। सो x बिलोंग्स फ्रॉम 1 to infinity प्लस -1 ऑल्सो। -1 भी है आंसर, प्लस की जगह यूनियन होता है, बेसिकली यूनियन लिखते हैं। यूनियन मतलब वो भी कि सिर्फ -1 एंड 1 से लेकर इंफिनिटी ऑल्सो। इंफिनिटी को हमेशा राउंड ब्रैकेट देते हैं, तो दिस इज योर आंसर। Cool. So this is what happens at powers. तो करो अभी ये वाला करो. Do it accordingly. Tell me what the answer will be. Very good. Okay. Okay. So I will plot -2 here. -2, -1, 2. And this is -2 again. Actually, let me change this number, okay? Because I don't want unnecessary confusion. Make this 3. Make this 3. I will solve for -2 also. ऐसा नहीं कि बस गलत है. But I want to make this 3. तो यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, -3 प्लॉट होगा, राइट? क्या प्लॉट होगा? अरे अरे अरे, why are you acting up? Right? तो इस हिसाब से draw the graph, है ना? When we draw the graph, what are we getting? We are getting there's -3, -2, -1 and 2. यहाँ से start होगा. इसका power, sorry 2 का power 1 ही है, तो यहाँ पे side will change. -1 का power भी 1 ही है, तो it will change like this. Then at -2 the power is even. So at even power the side doesn't change. And at -3 the power is odd. So side changes. So this is your final answer. Right? और उन्होंने पूछा है where is it greater than 0? Here, here, here. So x is -3 to -2. -2 to -1 मतलब -3 to -1 पूरा है, ये -3 to -1 यूनियन 2 to infinity. बस ये -2 हटा दो जो तुमने बीच में लिया है, बिकॉज -2 पे वो इक्वल टू 0 है, तुम्हें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -2 के अलावा बाकी सब. Then this is the answer. Show of hands if you got it right. All right. All right. Rene, did you understand this? Yes. Very good. चलो. अब this one, I have 3-4 more variants. अब इसमें क्या है? इसमें again there's an objection. Objection is, as I told you, we are looking for x minus b. This is not x, this is 4x. So what I'm going to do is, I'm going to take the 4 out, and I'm going to be like, this is x plus 1 by 4, right? Into x plus 3 is less than 0. I'm going to take the 4 out, right? And then the 4 goes by division there. So this becomes x plus 1 by 4 into x plus 3 is less than 0, because 0 divided by 4 is 0. So I got my equation in the format that I like, which is x minus a, x minus b. So I will be plotting -1 by 4 for this, -3 for this, right? So -3 इधर आएगा, -1 by 4 is obviously smaller, तो वो इधर आएगा. And then, sorry, larger, that's why वो इधर आएगा. ऐसे प्लॉट किया. Less than 0 ढूंढना है, तो less than 0 कहाँ पे? Less than 0 is between this. So x belongs from -3 to -1 by. This is the answer. मजा आता है ना करने में. हमको जेई में ये सिखाया जाता है 11th या 12th स्टैंडर्ड में. So it is taught for JEE. 11th or 12th, I don't know, but तभी मुझे मजा आता था ऐसे से करने. फिर चलो बताओ अभी 8th one. ठीक है ना, ये समझ गया है ना कि हमने 4 क्यों निकाला, बिकॉज हमें x minus a, x minus b फॉर्मेट में चाहिए. अब this is where fractions come. We did fractions earlier, right? And we took the longer approach. We were like, okay, this is numerator, denominator, and all of that. But no, the fractions can also be done like this, because this is x plus 2 into x minus 3 raised to -1.
greater than 0, right? It is greater than -1. रेज टू पावर -1 अगर डिनोमिनेटर वो भी नेगेटिव ही पावर है, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊं, मैं इसके लिए -2 और इसके लिए 3 प्लॉट करूंगी, है ना? दिस इज 3, दिस इज -2, यहाँ से ऐसे जाएगा, क्योंकि -1 भी ऑड ऑड पावर ही है और मुझे ग्रेटर देन 0 निकालना है, तो मैं अपने आंसर उस हिसाब से लिखूंगी कि x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। तो पॉलिनोमियल इक्वालिटीज इसी फॉर्मेट से, अगेन दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी सॉल्व, यू रिमेंबर? हमने कहा इतने बड़े से करा था हमने, फ्रैक्शंस ढूंढ के, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, याद है 2 pages we required to solve it, and I did it at the beginning of the class in fractional inequalities, right? Same thing it was, same thing we did in the beginning of the class in form of fractional inequalities, and we used 2 pages where we took that for this side, which we have to do now also. So then we were like, okay, this is basically x plus 2, sorry, x minus 2 upon x plus 3 minus 4 is greater than 0, and then we were like, okay, let me simplify this, and then from there we got 3x plus 14 upon x plus 3 as less than 0. यहाँ तक हम पहुंचे थे ना, यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, right? We learned how to directly solve it. For this, we will have to plot x as, so this becomes, wait, let me just write it nicely. So this becomes your, what is happening? Some paranormal activities, guys. Tomorrow, if I don't meet you for the class. Okay, so this becomes, oh my god, I'm scared. Okay, this becomes 3x plus 14 into x plus 3 as less than 0. And then basically you put the 3 out. This is x plus 14 by 3 into x plus 3 greater than 0, right? And sorry, less than 0. And then here for this one, you plot minus 14 by 3. For this one, you plot minus 3 on the graph. And as discussed, minus 14 by 3 is smaller. Then the graph becomes this. And then you have to find lesser than 0. So lesser than 0 means your x is between minus 14 by 3 to minus 3, which we any which ways had got an answer previously as well. Yeah. So इसमें we didn't need those 2 pages. We didn't have to go through numerator denominator की conditions and simultaneously solving it. We primarily understood this is equal to raised to -1 only, है ना, which is an odd power. Fair? चलो ये वाला करो, अभी मुझे बताओ what is the answer ABCD में से. Last question of this time. Very good. So again, you plot, this is x plus x plus 3 x minus 3 greater than 0. So I'll plot 3 and minus 3 and 3, which is here. Accordingly, this graph will come, and I want greater than 0. So my x is minus infinity to minus 3 union 3 to infinity. So my x is greater than 3 also and less than -3 also. So the answer is both A and C. You are right about it. All of you got right answers. Very good. Proud of you. And now we can move on. So these are the polynomial inequalities. Hai na? Now we are at the last type of inequality that we are going to learn. Okay. So what all did we learn? We learned linear, simultaneous, fractional, quadratic, polynomial. Right? After these 5 types of inequalities comes the last one, which is our modulus inequality. इसके बाद next class में जब हम inequalities करेंगे, so it would be combination of all of this together, है ना? Fraction में कोई तो फोन करने वाला है मुझे. हाँ, क्या 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 हो सकता है कि fraction में वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा mod आ गया, mod में quadratic आ गया, कुछ भी हो सकता है, तीनों चारों मिक्स करके. ठीक है, तो ऐसा आएगा, है ना? Accordingly, this is how we are going to solve it. उसके लिए we need to understand mod first. We have understood mod in functions also, but we are going to understand it today as well. What is mod? What is mod? So basically, mod represents an absolute value, right? Mod of any number gives its positive value as in its absolute value, right? So if you have mod x, it gives you an absolute value of x, right? तो mod की दो conditions होती है. अगर तुम्हारा x खुद greater than or equal to 0 है, तो mod x की value तो x ही आएगी. Yes or no? अगर तुम्हारा, या इस साइड लिखती हूँ,
अगर तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू तो x ही आएगी, राइट? फॉर एग्जांपल तुम्हारा x अगर 2 है तो मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होता है, चेंज क्यों होगा, राइट? यस और नो? बट जैसे ही तुम्हारा x लेस देन 0 होता है, if your x is less than 0 then mod of x is minus x. What do I mean by that is, अगर मेरा x minus 2 है तो mod of minus 2 तो 2 हो गया ना, mod of minus 2 तो 2 हो गया ना, it is minus of minus 2. So if x is less than 0 you get mod as an absolute value, मतलब negative of negative, that's why minus x. But if x is greater than equal to 0 so then you get answer as it is. Correct or not? Correct or not? Fair? So whenever you have mod you solve using two cases. Your first case becomes your first case becomes, let's say, mod of x minus 2. So let's say whatever is inside the mod, x minus 2 is inside the mod, it is greater than equal to 0. Let's say it is greater than or equal to 0, which means your x is greater than, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है ये, क्यों है ये, था मग जो भी है बड़ा बुरा लगता है. X greater than equal to 2, right? For every x which is, for whatever is inside the mod, x minus 2 is greater than equal to 0. So x is greater than equal to 2, right? And whatever is inside the mod, now we know if it is positive, the x is going to be this only. Now, whatever is inside the mod will return as it is. Actually, let me make two lines here so that I can solve two cases separately. So as I told you, we take two cases. Our first case will be like whatever is inside the mod, whatever is inside my mod, I am going to say that it is greater than equal to 0. That way, my mod is going to return the same value as it is. And I can solve the inequality. What is my inequality? My inequality said x minus 2 is greater than equal to 0. अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इस mod को ना थोड़ा अलग करती हूँ. For explanation purposes, let's say greater than equal to 4 है. Let's say greater than equal to 4 है. ठीक है? तो अब क्या हुआ इसमें, मेरा मॉडुलस का वैल्यू वैसे के वैसे आएगा. I'm like, okay, now my inequality mod I can remove like this, and this becomes greater than equal to 4. So then it becomes x is greater than equal to 6. So simultaneously solving, x is greater than equal to 2 also, greater than equal to 6 also. Matlab my final answer is my x is greater than equal to 6. Right? This will be my final answer for this case. And let's say I take second case. My second case says that my x minus 2 is less than 0. Matlab x is less than 2 basically. Right? And for this, my mod is going to open as negative of x minus 2. Because whatever is inside the mod, I took it as less than 0, so it will open negatively. So then my inequality, my question will become minus x plus 2, minus x minus 2 is greater than equal to 4. So minus x greater than equal to 2. So x less than equal to 2. This is what my inequality is with me. So if x is less than 2 and less than equal to 2, to merge it together, my final answer, merging these two together, will become x is less than 2 only. Right? So then it means I have two answers to this. Either my x is less than 2 or greater than 6, including 6. Either my x is less than 2 or greater than 2, greater than 6, including 6. So this is how you solve mod question. Mod questions are solved by understanding that mod can open in two ways. Mod can open in two ways. One way is that mod opens positively as it is. Another way is mod opens negatively, that is minus of whatever is inside the mod. And that is how you solve. Fair? Yes or no? Yes or no? So we are going to learn to solve more questions of mod like this. So what do we have? We have this. First condition we're going to take. How do we solve this? We solve this by considering two conditions. First is my whatever is inside the mod is greater than equal to 0. Second is whatever is inside the mod is less than 0. So basically I'm considering this. Here I'm considering this. As per the condition, my mod is going to open up just like this. So this will become x plus 9 is less than 6. So x is less than minus 3. X is less than minus 3. These are the two conditions. Here my mod is going to open up negative. So my inequality will become right. If I have to merge these two conditions, it becomes that my x is greater than minus 9 and less than minus 3. So this becomes my x is from minus 9 to minus 3. While here, if I merge these two conditions, it says that my x is greater than minus 15 and less than minus 9. If you can't solve directly, plot it on the number line. So this becomes my x is belongs to minus 15 to minus 9. Now, if I merge these two conditions, I basically understand ये minus 15 से minus 9 है.
और ये -9 से -3 है, मतलब at the end of it if I merge both of them together it means -15 से -3 सारी ही वैल्यूज है, राइट? -15 से -9, -9 से -3, मतलब -15 to -3 all values are legit for this. Do you understand? Give me a yes if you understand this. चलो तो इसके बेसिस पे ये क्लास सॉल्व करके दिखाओ मुझे. First condition, second condition. What is the first condition? That x plus 2. Right? First condition is for x greater than equal to -2. Second is for x less than -2. Accordingly, if we solve, open the inequalities, we get x greater than equal to 3. So for these two conditions, if x is greater than equal to -2 also, greater than equal to 3 also. So इसका मतलब end में हमें x greater than equal to 3 लेना पड़ेगा. और यहाँ पे less than -2 है, -2 -7, less than -2 भी है और less than -7 भी है, तो obviously less than -7 लेना पड़ेगा. दोनों को merge करो तो फाइनल आंसर क्या आएगा? दोनों को मर्ज करो तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर ये आएगा कि माई एक्स इज आइदर, मतलब माई एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू, यहाँ पे कैसे लिखूं मैं, ऊपर लिख देती हूँ, है ना? तो इट्स लाइक यूनियन ऑफ दीज टू कंडीशंस, मतलब इट इज लेस देन -7 और ग्रेटर देन -3. सो हियर माय आंसर विल बी दैट माय एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू -7 इंक्लूडेड यूनियन 3 to infinity. दिस इज माय फाइनल आंसर. ठीक है, fair? So this is how you solve modulus. I hope you understand this. इसके आगे बहुत है, मतलब modulus और सिखाना है मुझे, जो मैं सिखाऊंगी आराम से. अभी let us not overboard ourselves. And साथ में next class में we will solve inequalities that are combination of lot of things put all together. ठीक है? Combination of lot of things. ऐसा होगा ये. Combination of lot of things put all together. So we are going to park at this, है ना? And that is it for today's class. I hope you learned all the inequalities separately. You're supposed to watch this class again. Or if not watch the class, just look at this PDF will be uploaded, right? So you refer to that PDF, you solve all the questions yourself and check if your answers are correctly matching. That means your fundamentals are right. And then you will be ready for the next class, which is regarding the applications of inequalities. ठीक है? तो उसमें हम मल्टीपल टाइप की इनइक्वालिटीज ऑल पुट टुगेदर कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. एंड बाकी इनइक्वालिटीज विल बी कंसिस्टेंटली अ पार्ट ऑफ योर DILR, योर कॉन्स आल्सो, नंबर सिस्टम, जनरल क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, राइट? नंबर ऑफ वैल्यूज, डोमेन रेंज में काम था उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हर चीज से हर कुछ रिलेटेड होता है. एवरीथिंग कम्स टुगेदर.